TEF program, if you have very strong content, very strong hold, especially in past activities, it give you an edge. वो आपको एक बहुत बेस्ट एक एज देगा आपको. जैसे फॉर Mm. एग्जांपल, हम कुछ लैंग्वेज में आज हम वी विल स्पीक इन अ लैंग्वेज, विल स्पीक इन फ्रेंच आफ्टर हाफ एन आवर. But today you need to understand first what content we are doing, and today you will speak with me in French. Okay? Now, for Okay, sir. example, we have a verb lire. What is lire? Lire is to read. Yep. Lire is to read. The moment we conjugate the lead verb with I read, you read, repeat after me, because this is your irregular verb. This is Mm-hmm. your irregular verb. Repeat after me. Je lis is to I read. Repeat after me. Je lis. Usually Because is this is to your I read yes, this is your present tense. Tu lis, tu lis, truly. elle lit, And nous lisons. no Repeat after liaison. me. Nous lisons. No liaison. Vous Vous lisez. vous Vous lisez. lisez. Il, Il elle elle lise. lise. Repeat, lise. Lise. Repeat after me. Je lis, tu lis. Enjoy the language, please. If I'm saying enjoy, whatever I will say today, you have to speak in French. S'amuser, s'amuser. My friends, today, Amazing. in a language, you need to enjoy. Don't Yes, feel sir. boredom. Oh, what is this going on? No, enjoy. कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बोलेंगे लैंग्वेज में. S'amuser is to enjoy. This is sir verb basically. There are some Mm-hmm. verbs which start from sir pattern. There are some verbs in French this that start from se pattern. Sir. Is it clear to you, sir? Yes, S'amuser sir. to enjoy. I'm enjoying my life. S'amuser. Repeat after me. Some S'amuser. use Yes. Now, for example, whatever I will say, for example, for example, par for example. example. Jali, tuli, ileli. Repeat after me and take my voice. Speak up. Jali, Jolly. Jolly. tuli, Tully. ileli. Ille. Lee. Nous lisons, Nous lisons. vous lisez, Vous lisez. elle lise. Elle lise. Now, for example, say, I read a document. Now, for example, you will say, I read a document. Je lis, I read a Jolly. document. What is un Oh. document? Document we write like document, but Mm-hmm. as en sound is on. The sound of Okay. en is on. It's document. Je lis un document. Document. Je lis un document. I Document. read a document. Say Claire, Mm-hmm. is it clear to Yes, you? sir. For example, Yes, sir. say I read a newspaper. Now, for example, you will say I pen down, please. Jolly. Very good. Je lis un journal. I read a newspaper. Je lis un journal. Journal, c'est autre quoi? Your newspaper. Journal. Je lis un document. Je lis un journal. C'est clair. Is it clear to you, my team? Tell me yes or no. Yes. Yes, C'est sir. clair? Now, Yes, sir. for example, maintenant, ici, en ce moment-là, take my voice and you have to speak in the same sense. Maintenant, what is maintenant? Tell me. Maintenance. Maintenant is now, Maintenance. No. maintenant, ici is here. What is ici? Tell me. Ici is Here. here. En ce Here. moment, in this moment, we have en ce moment. One second, please be online. Yes, sir. En ce moment, répétez après moi. En ce moment. What is en ce moment? At this moment. At this En ce moment. moment. En ce moment is what? At this moment. En ce moment. At this moment. Ici, en Oh, ce moment. En ce moment. En ce moment, c'est votre quoi? C'est votre awesome moment. en ce moment. In this moment. Is it clear to you?
So now repeat after Yes, me. sir. Maintenant, ici, en ce moment. Now, here, at this, in this moment. Now, here, Here, in this moment. On. What this is on? moment. In. So is this. Moment And is moment. You say, okay, in this moment. Oh, okay. In this moment? mm-hmm. En ce moment. En ce. Awesome. Momo. Very good. Maintenant. Maintenant is now. Ici Now. is it clear to you? Yes, So, sir. for example, this is your present tense. C'est le présent. Repeat after me. Monsieur, monsieur. Monsieur, Yes, monsieur. sir. Take my voice. C'est le présent. This is say présent. Présent. This E we have aigu. Présent. Présent is Yes, present. sir. Présent is present. This E Mm-hmm. we have aigu, my friend. Aigu. Okay? Présent. Présent is present. Is it clear? Present. Now, for Yes, sir. example, we have past activities. Mm-hmm. We have past activity. Activité passée. Activité. Activité passée. Activité passée. C'est la activité passée. Activity Activité. past. Activité passée. Passé, past activities. Is it clear to you? Now, Yes. past activity we need to understand. Now, for example, if you teach me English, for example, and you teach me past tense, how you teach me? You'll say go, went, gone. Okay, I said okay, Yeah. go, went, gone. Then you will say see, saw, seen. I will say, ma'am, why? How I will come to know go? Past is WENT, then GONE. Then you'll say, Yes, sir. okay, and then you'll say find, found. I'll say dramatically it is the things are changing. There are a lot of verbs, but in French it is not like English. Yes, sir. It is very easy pattern. The Mm-hmm. past of clear is lieu. The past of Okay. clear is lieu. Is it clear to you? Okay, sir. The past of clear is lieu, and Mm-hmm. as a rule in French, we need to use our expression in case of past tense. First, we'll understand French with our expression. What is our verb? Tell me. Our is to has have. Yeah. Now the conjugation of our in present tense. Tell me. J'ai. Repeat after me. J'ai Je. is to I have. Repeat after me. J'ai. Repeat. Your is do I have. J'ai. Yeah. Repeat Je. after me. Tu are. What is Je. tu are is you have. Is it clear to you? You have. Yes, sir. L are is to he, she has. We have done right our conjugation. Yes, sir. Nous Yes, avons. sir. Vous avez. C'est clair. And Yes, sir. elles ont. C'est clair. Yes, sir. So repeat after me. J'ai. Tu, Je. tu as. Tu Il as. a. Il Elle a. a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Elles ont. Elles ont. My friend, if I will say I read a document in the past tense, you say I read a document, which is je lis un document. But if I'll say I read a document, j'ai lu. Why j'ai lu? In order to make Because. past, use our Mm-hmm. expression and then PP of the verb, past tense of the verb. J'ai lu. C'est J'ai clair. lu. J'ai Yes, lu. sir. J'ai lu un document. Document. J'ai lu Okay. un document. I read Mm-hmm. a document. Is it clear to you, my team? J'ai Yes, sir. lu un document. Now you came to know. Now you came to know lire. Lire is what? Tell me. What is lire? Lire is to. Need is to read. Je lis, tu lis, il elle lit, nous lisons, vous lisez, il elle lise. But past tense, pepe, we got as pepe. Participe passé, past tense. Participe passé. Participe passé.
दिशा, आपको हर एक चीज क्लियर हो रही है? नहीं हो रही Yes, तो sir. मुझे स्टॉप करना वहीं पे आप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड participasse, the past tense, we call it as pay, pay. P we call it as pay, 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 pay stand, first pay stand for participasse, participasse, Okay, sir. say Passe. clear. Is it clear to you? Yes, sir. Participasse, pay, pay. Now, for example, if I will say, मैं आपको ये चीजें क्यों दे रहा हूँ दिशा? बिकॉज Mm-hmm. मुझे पता है, आई नो दिस थिंग. This the same thing. J'ai lu un document. J'ai lu un journal. You will use in TEF section A and section B. Okay. Comfort may you have to say these lines for this reason. Dramatically, we are picking the pattern, but obviously we are learning French the basic. But dramatically, we we are getting we are getting in touch with this TEF content. Is it clear to you? Yeah. Say clear. Yes, sir. Now, for Yes, sir. example, there's a verb voir. Now, voir is to see. What is voir verb? Mm-hmm. Voir is to To see. 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 Say clear. Yes, Now, sir. for example, obviously, there are a lot of things. Voir is your past. Voir Mm-hmm. is to see. Is it clear to you? So, how Yes, to sir. conjugate voir verb? Repeat after me. Irregular verb, je vois. Repeat after me. Je vois. Je vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Elle voit. Elle voit. Elle voit. Nous Elle voit. voyons. Repeat after me. Nous, Nous nous voyons. voyons. C'est clair. Yes, sir. Nous voyons. Vous voyez. This is your irregular verb. I'm very sorry. Typing error. So now repeat after me. Voir is to see. What is voir verb? Tell me. Or is to see. So repeat after To me. see. Je vois, tu vois. Je Je vois, tu vois. vois. Tu vois. Elle voit. Elle voit. Voyons. Nous voyons. Vous voyez. Vous voyez. Elle voit. Elle voit. Elle voit. पता है क्या करना है दिशा आपको? Yes, sir. You need to apply these recordings in your house. Now, Okay. for example, you are sitting, Mm. you're checking the Facebook, Instagram. Apply this recording so that जो वॉइस है ना वो आपके आपके ईयर से माइंड में होके निकलती रहे. वेव्स, जो ये वेव्स हैं आपकी वॉइस की, जो वेव्स हैं. Mm-hmm. Okay. You are eating something, you are driving, you are Mm-hmm. in a garden, you are walking. Apply these audios. आई एम नॉट सेइंग Okay. कि आप फ्रेंच में सॉन्ग्स सुनो. नो 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 नो, अभी नहीं. सिर्फ अप्लाई माई ऑडियो को सुनते रहो. वन ऑडियो यू नीड टू लिसन मल्टीपल टाइम्स Okay, sir. so that at least I can see that, I want to see that, I saw a newspaper, I saw an advertisement, I saw something else, so that I can see some, I can speak in a language. Is it Mm-hmm. clear to you? Yes, sir. C'est clair. So now repeat after me. Je vois, tu vois, elle voit. Je Je vois. vois. Tu vois. Elle voit. Nous voyons. Nous voyons. Vous voyez. Vous voyez. Elle voit. Elle voit. Voix, Voit. voix, voix. C'est clair. And Yes, voir sir. past is view. The Okay. past of war is view. And if I will say I saw, as a rule, our expression, it is Mm-hmm. not like English see, saw, see. No, 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 no. Simple. War paper is view. View. Lead is liu. Lead Mm-hmm. is liu. And war is view. So if I will say I saw, j'ai vu. C'est clair. Yes, Is it sir. clear to you? Yes, J'ai sir. vu. Make J'ai the vu. sentence we saw. Nous avons Nous avons. vu. Mhm. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Yes, sir. Claire? Now,
Yes, sir. I'm giving you irregular verbs so that today you will come to know irregular version. Okay. Now, Okay, for sir. example, we have verb go. Go. Okay. Ale is to go. Ale. Alright. Ale Yes, sir. is to tell me. Go. 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 Obviously, you have done ear-ending verb. Yeah. And if I will say what is the formula of ear-ending verb, you will say E, ESE, ONS, EZ, ENT. Say clear. Plenty. Yes, sir. But there's some verbs which we don't have ending. We need to understand the conjugation by heart. And we already have done, I think. What is ale? Go. And what is Go. the conjugation? Remember? Je vais, I go. Remember, Disha? Yes, sir. Yes, Je sir. vais, To tu go. vas. Speak up, You speak up. will. Parlez, 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 s'il vous plaît. What I'm saying, Disha. Disha, parlez, s'il vous Play. plaît. To Parlez, speak. s'il To vous plaît. speak. Speak, please. Parlez, s'il vous plaît. Speak, please. Mm. Parlez, parlez. Je vais, Parlay. tu vas, il, elle va. Repeat Il, after me. elle va. Je Je vais, vais. tu Tu vas, vas. il, elle Il, va. elle va. Nous Nous allons. allons, vous allez, Vous vous allez. allez, Vous allez. ils, elles vont. Is it clear to you, my team? Yes, sir. Clear? So, my friend, repeat after me. Je vais, Je vais. tu vas, Tu vas. il, elle va. Il, elle va. Nous allons, Nous allons. vous allez, Vous allez. ils, elles vont. Ils, elles vont. Yeah. Now, as a rule, my friend, ale past any verb as a rule. Any Mm-hmm. verb is ending with er as a rule. Any verb is ending with er. उसका Mm-hmm. पास्ट पता है क्या होगा? ईएग्यू. तो हम ए एल एल के आगे देखो वेयर इज दैट गॉन. देखो एनी वर्ड इज एंडिंग विद er. एनी वर्ड इज एंडिंग विद er. कोई भी वर्ब आपकी er पे एंड हो रही है. क्लियर हो रहा है आपको? Mm-hmm. सो Yes, sir. उसका पास क्या होगा? जो ईयर है, एज ये रूल है बाय डिफॉल्ट, बहुत सिंपल है. वो ई एग्यू ए पे चला जाएगा. ए सिंबल ई का. सो आले ई एग्यू. से क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. टेल मी यस एंड नो. Yes, अब sir. आपको समझना पड़ेगा. पास्ट में यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दिशा. ईदर पास्ट will conjugate with avar. Mm-hmm. Either past will conjugate with verb. Yes, that's a rule. Your French is totally based upon avoir and être. Your French is totally based upon avoir and être. Some verbs we need to conjugate with aller, Okay. sorry, pardon, avoir, and some verbs we conjugate with être. Now, we'll say, sir, how I will come to know? I give the hint for that. Mm-hmm. Not in every case, but 99%. 99%. If there's a leg movement in the verb, there's a leg movement verb. There's a Okay. movement of your legs. Ale is to go. There's a Yeah. movement in your legs. So leg Yeah. movement verb will conjugate with être family verb. This is your être. Now, what Mm-hmm. is être, Disha? You tell me what is être first of all. Tell me what is être. Is MR? Yeah. So what is the conjugation of être? Tell me. Tell me. Uh, Je suis. I just am. we. Practice. Okay. Je suis. Repeat after me. Je I suis. am. I Tu, am. you a. Mhm. You To are. a. You are. Il. Elle. A. He. She is. C'est clair. L. L. A. Yeah. He. She is. Nous sommes. We are. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. You are. And Vous êtes. You are. ils. Elles sont. They are. They are. My friends, repeat after me. Je suis. Tu es. Il. Elle est. Nous sommes. Je Vous êtes. suis. Tu. Ils. Elles sont.
Repeat करेंगे हम लोग. Repeat after me. Je Yes. suis is Je to suis I tu. am. I am. Je suis is to I am. Tu es Tu is is to you to are. you are. Il, Tu a el, is to il, el, a a is to he, she is to is. he she is. Nous sommes is to we are. Are. And Vous êtes vous êtes, ils, is elles to sont. C'est il clair. elles sont. Yes sir. Now if I'll say I went, simple. Year ending verb will convert it into EAQ. Aller is your leg movement verb. Je suis Je zale. Why suis is zale? Because any word is ending from a consonant as and yeah the next word is and starting from start a vowel. We need to combine the sound. Je suis yeah. zale. Yes Je sir. suis allé. It means je suis allé is what? I went. Je suis allé. Répétez après moi. Je suis allé. Tu es Je allé. suis Répétez après allé. moi. Je suis allé. Je Tu es. suis allé. Tu es Tu es allé. Tu et es allé. 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 Tu es allé. Tu es allé. Is it clear to you, my friend? Il, Yes sir. elle, est allé. My friend, one thing you need to understand. One thing we need to understand. If it is an eth Mm-hmm. family verb, but not in our family, if it is eth family verb Mm-hmm. with female, you can apply one more e. That's a rule. Now you say she went. Sorry, yeah, she went. So Mm-hmm. la, tale, and apply one e for a female, feminine, but only in case of Okay. eth family verb. Say Claire. सर मैं एक बार ये राइट डाउन ताकि मुझे याद रहे. Don't worry. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है. Okay. ये जो मैं क्या तभी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा. देखो क्या करना है दिशा. The best part is Mm-hmm. the session under recording. Whatever I'm saying, it is under recorded. And that's why I'm saying now, for example, Yes sir. Disha, you will listen this recording 20 times. Let's take an example. How much time you are spending Okay. in your house is in Instagram, Facebook, garden, driving, sitting in the balcony, standing in the balcony. If I will ask for me, I spend almost 2-3 hours standing in the balcony in the garden. Maybe I'm doing some gymming work for spending 1 hour in gymming. So whatever you are doing, Mm-hmm. you need to apply. If you're doing exercise, apply my audio with in. If you're doing something else, if you're doing that things wherein you can listen my videos. Mm-hmm. Now listen my audios. For example, you are eating. You can have your ear is free. Obviously, you can do this in your house, in your office, in your workplace. But if you have a time, apply these audios, and the moment you will listen 10 times, 11 times every video, I'm sure you'll get a pace and you can speak a language, because this is the because repetition is the best key to learn a language. Yes sir. The more you will listen, one day will come, you will speak very fluent, and this is the best key to learn. I'm telling you, it's a reality, my friend. Say Yes Claire. sir. Okay, now for Yes sir. example, what is it? For example, enjoy. She went la tale. Now why tale? As a rule, for female, we need to apply E at the end. Say Claire. Is it clear to Yes you? sir. Okay. Yes sir. Je suis tué. We went. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Over here, if we have plural, nous is we is plural, apply S Mm-hmm. at the end. But only in case of past tense with être family verbs. Say Claire. I Sorry, tell what you. what was that sir? Nous sommes allés. Say Claire. Nous is Yes what sir. plural? Yes Only sir. in case of ether family verb, Mm-hmm. not in our family verb, because in past you need to use two expressions. One is our Yeah. and one is ether. Say Claire. Yes sir. Only in case of ether family verb, if you have plural, we Okay. apply s at the end. Okay. Ale, A-L-L-E-A-Q, and then s. Okay. Say Claire. Yes sir. Okay. Yes sir. Now, for example, what is speak? Tell me, what does it speak in French?
Disha, tell me. Follow. Very Follow. good. And what is the formula of year-ending verb? Tell me. It's E, sorry. E es, E E, E है ना? E S. Ons, Yeah. O ez. N S E Z E N En. T I can say I speak. O U S. Yeah. Je parle. I speak. Say Claire. Yes, sir. But if I say I spoke, so simple. What is the formula of year-ending verb? Tell me. Parler. What is parler? And what is the past of year-ending verb? Tell me, Disha. I told you. What is the past of ER? EAQ, A wala symbol. Yeah. I give. Yes, sir. So PARL, E. EAQ, A wala symbol. Say Claire. Yes, sir. Tell me yes and no. Yes, sir. PARE के ऊपर आप I सिंबल लगाओगे ए वाला. Say mhm. Claire, EAQ. So Yes, make sir. the sentence I spoke. अब ये स्पीकिंग में तो कोई आप लेग मूवमेंट लेके ही नहीं आ रहे हो. तो I spoke is what? J'ai parlé. Our J'ai verb. parlé. Say Claire and EAQ. Is it clear to you? Yes, sir. Clear हो रहा है my friend? Yes, sir. What is your vocab to manger? Manger is to eat. Yeah. What is I eat? Tell me. Je Yeah. mange. Mange. Yeah. But Je mange. I ate. ER का क्या होगा? ई क्यू बन जाएगा. ए वाला सिंबल. I give it right. Yes, sir. तो आवर लगेगा एज अ रूल. जय मोशे. अब ये इंग्लिश नहीं है कि ईट एट ईटन. चलो हम ये बचपन से कर रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन अगर नई लैंग्वेज में इतना करना पड़ जाए, वो तो एट फिर Mm-hmm. ईटन फिर कम केम कम फाइन कितना टफ हो जाएगा. इसमें ऐसा नहीं है. सिंपल है माय फ्रेंड. ई एग्यू आवर एक्सप्रेशन जय मोशे. से क्लियर. Yes, sir. हाँ. लेकिन जो लीर है, लीर लीर पास्ट है ल्यू. ये हमें ना सिर्फ, आपके पास पता है फ्रेंच में क्या है पास्ट में? या तो Mm-hmm. आपका वर्ब ई एग्यू से एंड होगा, या यू से एंड Okay. होगा एज अ रूल, Okay. या आईटी से एंड होगा. से क्लियर. Okay. ओके. Yes, या फिर sir. वो यूज, यस, या यू से एंड होगा, या ई एग्यू से एंड होगा, या वो आईटी से एंड होगा. सिंपल. और कोई. Okay. यस, वेरी सिंपल. जैसे Okay. अभी ये आपको पूरा समझ आ रहा है आपको ये? Yes, sir. या फिर आपका एक होगा आई एस से एंड होगा. ये चार आपके सिंबल्स हैं पास्ट के. Okay. जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मेरी ऑडियो पे सुनना है आपको ये. प्रोन्थ्र Okay. इज टू टेक. व्हाट इज प्रोन्थ्र? Is to take. प्रोन्थ्र इज टू टेक. इज इट क्लियर टू यू? Take. Yes, sir. व्हाट इज प्रोन्थ्र? टेल मी. To take. प्रोन्थ्र इज टू टेक. इज इट क्लियर टू Take. यू? Yes, sir. आप प्रोन्थ्र के आगे सी ओ एम लगा दो. सी ओ एम. ये बन गया कॉम्प्रोन्थ्र. Comprehend. कॉम्प्रोन्थ्र बन गया अंडरस्टैंड. तो प्रोन्थ्र तो हुआ Understand. टेक. Mm-hmm. प्रोन्थ्र इज टू टेक. लेकिन आगे Yes. मैंने सी ओ एम लगा दिया. कॉम्प्रोन्थ्र. ये बन गया अंडरस्टैंड. Understand. क्लियर. अब Yes, sir. कोम हटा के मैंने यहाँ पे एपी लगा दिया, तो ये बन गया अप्रोन्थ्र. और ये अप्रोन्थ्र Apprehend. बन गया लर्न. Learn. ये आपको समझना Okay. है. देखो, प्रोन्थ्र से हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करेंगे. व्हाट इज प्रोन्थ्र? Okay. व्हाट इज To प्रोन्थ्र? take. To take. पी ओ एम लगा देंगे. कॉम्प्रोन्थ्र इज टू अंडरस्टैंड. Understand. एपी लगा देंगे. अप्रोन्थ्र इज टू लर्न. Apprehend. से क्लियर. Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. अब सुनो, मैं ज्यादा Thank. हैवी नहीं कराना चाहता क्योंकि वो फलक अवेलेबल नहीं है आज. Mm-hmm. थोड़ा सा मैं बहुत आराम से पेस को लेके चल रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं ये रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा ही. फलों को भेजना, उनसे बात Thank करना, you. उनको बोलना कि हमें 1 आवर कंसिस्टेंट लगाएं तो हम बहुत अच्छे पेस पे आ जाएंगे. लग रहा है आपको Okay, दिशा sir. कि अगर कंसिस्टेंट Yes, 1 आवर, sir. सिर्फ 1 आवर मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आप Yes, मेरे sir. साथ लगाओ और उन रिकॉर्डिंग्स को सुनो, तो आप नेक्स्ट Mm-hmm. 7 डेज में एक लैंग्वेज बहुत अच्छे पेस पे आओगे आप. Yes, sir. लेकिन अब क्योंकि मैं सिलेबस थोड़ा सा नहीं करा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फलक के साथ इकट्ठा हो आपके साथ, और ज्यादा हम उसको समझ भी आए. तो एक उनसे रिक्वेस्ट करना कि क्लास को रेगुलर लगाएं, क्योंकि
सेशन हम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। और Yes, अभी sir. इसमें मैंने दो आप दोनों को ही रखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोनों कंफर्टेबल हो जाओ एक बार एक लैंग्वेज के साथ। तभी मैं तो काफी Yes, जो sir. स्टूडेंट्स मैंने अभी देखा ही नहीं है इस वाले बैच में किसी को ज्यादा। ठीक है, तो आप Okay, sir. इसको प्रैक्टिस करना है। Yeah. आपने अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। आपको मैं 2-3 सेशंस भेजूंगा, उनको लिख लिख के भेजना है आपको। इज इट क्लियर टू यू? Okay. Yes, क्या sir. करोगे? एक तो ये सेशन हो गया आपका क्लियर। Yes, sir. एक दो सेशन आपको और भेजूंगा, बिल्कुल बिगिनर्स के सेशन है। उनको पेन डाउन करके मुझे नोट्स भेजोगे आप अपने। Okay, sir. क्लियर? बाकी अगर आप मुझे सजेस्ट करो तो Yes, मैं sir. आपको आगे और करवा दूंगा, बट आई वांट कि अभी इतना प्रैक्टिस कर लो आप। Okay, sir. No problem. या अभी और करवाऊं? टेल मी प्लीज। It's okay, sir. It's up to you. मतलब मुझे चलेगा इतना। मैं आगे जो आप भेजोगे मैं वो करके आपको भेज दूंगी या तो। ठीक है, चलो तो करके भेजना आप मेरे को, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके सर। और वाह अक्षय तो ओके सर, बाय, थैंक यू। अक्षय तो वाह।